कब स्टार्ट करना है? 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं। Good evening, everyone. We'll be starting in a couple of minutes. Let other people join.
Okay, hello. Hello, everyone. So my name is Ishan Mahajan, and uh, I'm the current IEEE chairperson and the GDSC Machine Learning lead. So GDSC USICT and IEEE GGSIPU in collaboration brings to you Decluttering Machine Learning. So we plan to kickstart your ML journey through teaching you a little bit about data visualization and analysis, which will be done by Deepak Rawat, which is a GDSC USICT mentor. And then I will be talking about the little bit theory behind machine learning, what it is, and what categories it is being classified into, and the basic concepts and algorithms that we'll be using in today's project, uh, which will be taken through by Aditya, which is the IEEE Vice Chair, as well as machine learning mentor in GDSC USICT. So let's begin. Deepak, over to you. Yeah, so I will be introducing Pandas, NumPy, and Matplotlib. I'm going to discuss the basic data required for this project. मुझे पता है Pandas, NumPy और Matplotlib बहुत बड़ा है, but मैं यहाँ पे सिर्फ बेसिक डिस्कस करने वाला हूँ. So Pandas पांडास एक पाइथन मॉड्यूल है जो डाटा को रीड और मैनिपुलेट करने का काम आता है. बेसिकली ये पांडास जो वो यूज़ करते हैं हम, ताकि जो डाटा है वो हम एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में पा पाए, मतलब हमें एक टेबल के फॉर्म में सारा डाटा मिल पाए, इसलिए हम पांडास को यूज़ करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद पांडास. तो पांडास में बेसिकली हम पांडास को इंपोर्ट कराते हैं. इंपोर्ट पांडास एज पीडी करके. पीडी जो है इसका एक स्टैंडर्ड निकनेम है. आप कोई भी प्रोजेक्ट उठाओगे एमएल का, कभी भी अगर उन्होंने पांडास को यूज़ किया है तो उन्होंने इसका निकनेम एज पीडी ही लेंगे. आप कुछ भी ले सकते हो पीडी एज जो मन है आपका, बट पीडी एक स्टैंडर्ड निकनेम है. तो मैं अपने स्पाइडर के आईडी पे जाऊंगा. मैं स्पाइडर आईडी का यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छी लगती है बाकी सारे आईडीज या फिर कोई भी ऑनलाइन से, जैसे जुपिटर और गूगल कोलैब से, क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो हम अभी देखेंगे. तो मैं इंपोर्ट करता हूँ पांडास को. ये मैंने पांडास को इंपोर्ट किया, बेसिकली पांडास लाइब्रेरी को. अभी कुछ नहीं होगा, जस्ट ये रन हो जाएगी फाइल. इससे पता चलेगा कि हमारी फाइल में एरर नहीं है. फिर हम एक टाइटैनिक डाटा सेट पे वर्क करने वाले हैं. मैं टाइटैनिक डाटा सेट है मेरे पास ऑलरेडी. आप इसे कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत इजीली अवेलेबल है नेट पे. तो मैंने तभी से लिया है. ये बहुत इजीली अवेलेबल है. आप जस्ट टाइटैनिक डाटा सेट डालेंगे और आपको कैगल पे मिल जाएगा ये बड़े आराम से. उनका सबसे बेसिक है ये. सो उसके बाद हम बेसिकली जो ये टाइटैनिक डाटा फाइल है, ये बेसिकली CSV फॉर्मेट में होती है. कॉमा सेपरेटेड वैल्यू CSV की फॉर्म में, इस फॉर्मेट में होती है वो फाइल. तो पांडास के अंदर एक फंक्शन होता है रीड CSV करके, जो बेसिकली हमें CSV फाइल्स को रीड करने में हेल्प करता है. अगर जैसे मुझे CSV फाइल को रीड करना है तो मैं बेसिकली df एक वेरिएबल होगा जिसके अंदर हम सारा डाटा जो लोड होने के बाद है इसके अंदर रखेंगे. तो इसमें हम करेंगे pd, जो पांडास के लिए हमने लिया था, .read CSV और रीड CSV और फिर फाइल का नाम कर देता हूँ. df इक्वल्स टू pd डॉट रीड CSV और फिर डॉट CSV. अगर मैं इसे रन करूँगा तो अभी जो है वो df के अंदर सारा का सारा डाटा आ जाएगा इसमें. ठीक है. सो अब अगर मैं आगे बढ़ूँ तो अब हमने डाटा को लोड कर लिया है df के अंदर, पर हम चाहते हैं उसको देखना. तो अगर मैं सिर्फ प्रिंट df कर दूंगा तो वो मुझे बेसिकली सारा डाटा दिखा देगा जो भी हमने फाइल में लोड किया है. ये देखो, इन्होंने मुझे सारा फाइल दिखा दिया, मतलब सारा डाटा दिखा दिया. ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है स्पाइडर का, कि इसमें हम अलग से हमें दिख जाता है डाटा फ्रेम. अगर मैं सिर्फ डाटा फ्रेम पे क्लिक करूं तो पूरा डाटा खुल जाएगा. ये जो टेबल फॉर्मेट दिख रहा है इसे हम डाटा फ्रेम कहते हैं, और ये पूरा डाटा है हमारा, इसलिए मैं इसे यूज़ करता हूँ.
क्योंकि इसमें सब अलग अलग पता चल जाता है कि जो डीएफ है वो डाटा फ्रेम है। अगर मैं कभी आगे जाके एरे बनाऊंगा तो जो भी वेरिएबल होगा वो एरे होगा, ये मुझे बता देता है। इसमें अंदर कौन कौन से वैल्यूज हैं सब कुछ बता देता है ये। तो ये एक बहुत हेल्पफुल फीचर है इसका। और फिर हम अगर मतलब ये अभी तो पूरा डाटा दे रहा है, पर अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ ऊपर के कुछ लाइंस चाहिए, तो हम करते हैं df डॉट हेड, जिससे हमें सिर्फ ऊपर की 5 रोज मिल जाती हैं। जैसे मैं ऊपर वाले को अगर मैं कमेंट कर दूं, तो नीचे लिखूं df डॉट हेड, तो इससे मुझे फर्स्ट 5 रोज मिल जाएगी। यहाँ पे मुझे फर्स्ट 5 रोज मिल गई। अगर हम और आगे बढ़े तो हम हमें चाहिए होता है कि मतलब जब हम डाटा देखते हैं, अगर मैं प्रोजेक्ट उठाता हूँ तो उसमें मुझे डाटा जो होता है वो बेसिकली अननोन होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। हमें पता नहीं होता कि डाटा में कौन कौन सी फाइल्स हैं, क्या क्या उसके अंदर वेरिएबल्स हैं। ऑफकोर्स हमने df डॉट हेड करके हमने फर्स्ट 5 देख लिया, जिसकी वजह से हमें सारे कॉलम्स पता चल गए हैं, बट तब भी हमें उसका एक ओवरव्यू चाहिए होता है। तो उसके लिए हम डिस्क्राइब मेथड यूज करते हैं, जो हमें बेसिकली ओवरव्यू देता है हमारे पूरे डाटा का। ये हमें समराइज कर देता है डाटा को। इसमें जब हम ये करते हैं तो मैं एक बार करके दिखा देता हूँ पहले। df डॉट डिस्क्राइब, जैसे हम ये करेंगे, इसे रन करेंगे तो ये देखेंगे यहाँ पर हमें काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम, 25 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल, 75 परसेंटाइल और मैक्स मिल जाता है। बेसिकली काउंट होता है कि सर्वाइव्ड कॉलम जो है उसमें कितनी रोज हैं। इसी तरीके से हर रो का मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम, कितनी वैल्यू 25 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल और 75 परसेंटाइल से ऊपर है, और मैक्सिमम, ये हमें मिल जाता है पूरे कॉलम का, मतलब पूरे टेबल का, हर रो के लिए, हर कॉलम के लिए। अब अगर हम आगे बढ़े तो अब बात आती है कि हम जरूरी नहीं है कि हम हर बार पूरे डाटा के साथ ही डील करते हैं। हमें कभी कभी चाहिए होता है कि हमें एक सिंगल चाहिए। अभी तो मेरे पास इसमें अराउंड 6-7 कॉलम्स हैं, बट होता है कई बार कि आपके पास अराउंड 75 कॉलम्स भी होते हैं। तब हम क्या करते हैं, तब हम सिंगल सिंगल कॉलम व्यू करना चाहते हैं जो हमें काम के हैं। जैसे अगर मैं इसमें बोलूँ मुझे सिर्फ फेयर को व्यू करना है, तो मैं बहुत आराम से कर सकता हूँ। मैं करूँगा कॉलम इज इक्वल टू df ऑफ फेयर, अब प्रिंट कर दूंगा कॉलम को। अब यहाँ देखना, यहाँ पर एक कॉलम नाम का एक डाटा फ्रेम और बनेगा। ये देखो, कॉलम नाम की एक सीरीज और बन गई। वो बेसिकली डाटा फ्रेम ही है, बस इसमें कॉलम एक ही कॉलम है, इसलिए इसे सीरीज बोल रहे हैं। ठीक है, तो 887 का इसमें कॉलम बन गया, जो ये रहे। अगर मैं इसको भी डॉट हेड करूँ तो इसमें भी मुझे सिर्फ फर्स्ट 5 नजर आए, फर्स्ट 5 दिखेंगे, फर्स्ट 5 दिखेंगे। सो ये बहुत ईजी रहता है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर मुझे वही मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट करने हो, मुझे एक ही कॉलम नहीं, मुझे 3-4 कॉलम का काम है, तो ये बहुत ईजी है। जैसे हमें उन सबको एक स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अलग अलग लिख देना है। जैसे अगर मैं आगे बढ़ूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ, इसे थोड़ा सा कमेंट कर लेता हूँ ताकि वो मैसी ना लगे, बस इसलिए कमेंट करता हुआ चल रहा हूँ मैं। इसका नाम रख देता हूँ मल्टी इक्वल्स टू df फेयर। एक कॉलम का नाम था, आई थिंक सेक्स भी एक कॉलम है, और ई क्लास भी एक कॉलम है। तो अब मैं अगर प्रिंट करूँगा मल्टी को, तो ये देखना, जैसे ही मल्टी को करा तो ये डाटा फ्रेम है, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा कॉलम है, तो हमारे पास वो प्रिंट हो जाएगा फेयर, सेक्स और पी क्लास के साथ। और वही अगर मैं इसमें हेड कर दूंगा डॉट हेड, सो ये फर्स्ट 5 प्रिंट हो जाएंगे। सिमिलरली अगर हम आगे बढ़ते हैं, क्रिएटिंग अ कॉलम, ये एक बहुत अच्छा फंक्शन है पांडास का। अगर होता क्या है कई बार कि हमें ना एक
मतलब जो कॉलम हमें मिले होते हैं, बेसिकली जो डाटा मिला होता है, अगर मैं डाटा देखूं, अगर मैं डाटा खोलता हूँ तो इसमें बहुत सारी कॉलम्स हैं, पर हमें कई बार हर कॉलम का काम नहीं होता, हमें किसी भी कॉलम का काम नहीं होता। हमें चाहिए, जैसे मेरे को चाहिए कि मेल जो है वो मुझे ट्रू मिले और फीमेल फॉल्स मिले, मुझे ऐसा कॉलम चाहिए। तो हम यूज करते हैं एक फंक्शन जो पांडास हमें प्रोवाइड करता है। ये कैसे करना है इसे देखते हैं। df ऑफ मेल इक्वल्स टू df ऑफ टेक्स्ट, यहाँ पे भी वो मेल है। ये देखो, तो अब मतलब अभी मैंने इसे प्रिंट नहीं किया, तो रुक जाओ, एक मिनट, प्रिंट कर लेते हैं इसे। अगर मैं सिर्फ इसी को प्रिंट करूं, df ऑफ मेल, सिर्फ इसे प्रिंट कर दूं, तो अब एक नया कॉलम प्रिंट होगा जो बेसिकली ट्रू फॉल्स बोल रहा होगा। जहाँ पे मेल था वहाँ ट्रू और जहाँ फीमेल था वहाँ फॉल्स। सो ये कॉलम क्रिएट करने का तरीका है, और इससे जो हमारी मतलब अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है एक डाटा सेट को लेके कि हमें क्या चाहिए उस डाटा सेट से। अब हम शिफ्ट कर रहे हैं नम्पी पे। मुझे लगता है पांडास के लिए इतना काफ़ी था, इससे ज़्यादा पांडास किसी भी आप प्रोजेक्ट में शायद यूज़ ना करो। तो अब हम पढ़ते हैं नम्पी पे। नम्पी भी एक पाइथन पैकेज है, बट ये थोड़ा अलग है पांडास से। पांडास में होता है क्या है कि हम जब पांडास यूज़ करते हैं तो पांडास बेसिकली होता है हमारे रिप्रेजेंटेशन के लिए, कि एक यूज़र डाटा को पढ़ पाए, इसीलिए हम पांडास यूज़ करते हैं। बट नम्पी जो होता है वो होता है कि हम उस डाटा पे कुछ मैथमेटिकल के स्टैटिकल कैलकुलेशंस कर पाएँ। तो नम्पी करता क्या है, बेसिकली सारे डाटा को एक एरे में कन्वर्ट कर देता है, और उस एरे में कन्वर्ट करने के बाद हम उस पर बहुत सारे कैलकुलेशंस कर सकते हैं, जो कि हम डाटा फ्रेम जो कि हमें वो प्रोवाइड करता था पांडास, उस पर नहीं कर सकते थे। तो हम स्टार्ट करते हैं नम्पी के साथ। नम्पी को हम एनपी से डिनोट करते हैं, मतलब ये इसका स्टैंडर्ड निकनेम है। आप कुछ भी रख सकते हो, एनपी वाई, जो मन है आपका, बट नम्पी का जो एनपी है ये स्टैंडर्ड निकनेम है। अगर आप कोई भी फाइल खोलोगे तो एनपी ही मिलेगा। अगर मुझे, मैं ये कर लेते हैं, तो मैं अगर इस पूरे को कमेंट कर दूं और यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ numpy एज np, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अगर मुझे एक रो वाइज वेक्टर क्रिएट करना है, मतलब एक रो वाइज एरे क्रिएट करना है, तो उसके लिए सिंपली मुझे एरे के अंदर मैं एलिमेंट्स लिख दूंगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। एक ये एरे जो फंक्शन है ये हमारी हेल्प करता है। ये बेसिकली एक नम्पी का फंक्शन है जो हमें हेल्प करता है एरे क्रिएट करने में। किसी भी नंबर्स को अगर हम एरे फंक्शन के अंदर लिख देंगे तो वो उसको नम्पी एरे में कन्वर्ट कर देगा। मैं इसे यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, लिखने में टाइम जा रहा है थोड़ा। पेस्ट करता हूँ और स्पेस क्लियर कर लेता हूँ, स्पेस में एरर दे देता है। सो बेसिकली ये यहाँ पर बोल रहा है कि वेक्टर रो एक हमने वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर हमने इस एरे को स्टोर कराया है, नम्पी एरे को। अब मैं अगर इसे चलाऊंगा तो ये एक एरे देगा 1 2 3 का। ये देखो, ये एरे ऑफ इंट है 32, ठीक है। इसमें हमने मतलब इंटीजर वैल्यू रखी है और ये एरे है। अगर मैं इसमें फ्लोट डाल देता तो ये एरे ऑफ फ्लोट होता। तो देख रहे हो कितना कूल फंक्शन है ये स्पाइडर का। इसी तरीके से अगर मुझे कॉलम वाइज क्रिएट करना, मैं नहीं चाहता कि एक रो वेक्टर क्रिएट करूं, मतलब एक रो एरे क्रिएट करूं, मुझे एक कॉलम एरे क्रिएट करना है, तो मैं ऐसे कर सकता हूं। मैं हर एलिमेंट को अलग, मैं बोल रहा हूँ ये एक रो खत्म, दूसरी रो खत्म और तीसरी रो खत्म, और ये पूरा एक ही एरे के अंदर आना चाहिए। इसलिए हमने डबल स्क्वायर ब्रैकेट यूज किए हैं इसमें, करा और ये अलग हो गए, मतलब ये कॉलम एरे क्रिएट हो गया है। ये भी एक एरे ऑफ 32 है, देख सकते हो आप। इसके बाद अगर हमें एक मैट्रिक्स क्रिएट करना हो, ये भी बहुत सिंपल है। हम जस्ट जहाँ पे हमने जैसे कॉलम में किया था बस वैसे ही करना है। तो उसकी जगह बस हमें एरे पूरा एक अपना एरे दे देना अलग से। तो ये दो एरे हैं बेसिकली जिन्हें हम मैट्रिक्स के फॉर्म में दिखाएंगे। अब मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ पे मैट्रिक्स।
तो ये देखो ये मैट्रिक्स हो गया, मैंने ऊपर वाले को कमेंट नहीं किया। ये देखो ये मैट्रिक्स क्रिएट हो गया। सो बहुत बेसिक ऑपरेशंस है। इसके बाद जो ऑपरेशंस है वो तो मतलब हम उसमें करते थे पाइथन में, जो सिंपल पाइथन ऑपरेशंस है हमने रो क्रिएट कर ली। अगर हमें सेकंड एलिमेंट चाहिए तो हमें पता है कि जो पाइथन में जो इंडेक्सिंग शुरू होती है वो 0 से इंडेक्सिंग शुरू होती है। अगर मुझे थर्ड एलिमेंट चाहिए तो मुझे वेक्टर ऑफ 2 करना पड़ेगा क्योंकि वो 0 1 2 पे होगा। अगर उसी तरीके से मुझे किसी मैट्रिक्स में चाहिए तो मैं 1 1 करता हूँ। उसी तरीके से अगर मुझे सारे चाहिए तो वही हम कोलन यूज करते हैं। ये सब हमने पाइथन में पढ़ा हुआ है। और इसी तरीके से अगर मुझे कोई एलिमेंट सेलेक्ट करना है, जो मतलब अब सारे एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं मुझे अप टू थर्ड एलिमेंट वेक्टर रो के अंदर, तो मैं आगे वाले को खाली छोड़ दूंगा। आप यहाँ पे बेशक 0 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ 0 या फिर खाली छोड़ दो, ये सब सेम है। और थर्ड तो इसमें ये पीछे वाला काउंट नहीं होगा, ये बेसिकली 0 1 और 2 को प्रिंट करेगा, 3 को प्रिंट नहीं करेगा। मैं ये दिखा देता हूँ। इसमें जो थर्ड लिखा रहता है इसका मतलब ये इससे पहले तक के प्रिंट करेगा सारे। अगर मैं इसे करूँ प्रिंट, बंद कर दूं और वेक्टर रो वाले को खोल दूं, ये तो अब अगर मैं इसे प्रिंट कर दूंगा तो देखना ये 1 2 3 प्रिंट कर देगा। मैं इसके अंदर थोड़े वो बढ़ा देता हूँ एलिमेंट्स, अब भी ये 1 2 3 प्रिंट करेगा, ये 4 प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा है, तो ये 3 को इग्नोर कर देगा, ये सिर्फ 0 1 और 2 को प्रिंट करेगा। सिमिलरली अगर मुझे थर्ड एलिमेंट के बाद सारे प्रिंट करने हैं तो मैंने आगे थर्ड लिख दिया, पीछे वाला खाली छोड़ दिया, तो वो एंड तक जाएगा और 3 के बाद वाले सारे प्रिंट कर देगा। सेलेक्ट द लास्ट एलिमेंट, अगर लास्ट एलिमेंट सेलेक्ट करना हो तो -1 हम कर देते हैं। अगर या फिर अगर आपको सारे एलिमेंट मतलब आपको पता है कि आपके एरे के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स -1 भी कर सकते हो। सेलेक्ट द फर्स्ट टू रोज एंड ऑल द कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स, अगर हमें फर्स्ट टू रोज और सारे कॉलम सेलेक्ट करने हैं तो कॉलम्स के लिए यहाँ पे देखो मैं थोड़े से स्पेस के साथ कर देता हूँ। कुछ ऐसा किया है मैंने कि पहले मैंने कॉल 0 से लेकर 2 तक, अगर मैं फर्स्ट रो की बात करूँ, ये रो के लिए, इस कॉमा से इधर वाला रो के लिए और इधर वाला कॉलम के लिए, तो कॉलम तो मेरे को सारे प्रिंट करने हैं, पर रो जो है उसमें मैं सिर्फ 0 से लेकर 2 तक, मुझे फर्स्ट टू रो करने तो 0 से 2 तक, 2 वाला काउंट नहीं होगा तो 0 1 दो रो प्रिंट हो गई और सारे कॉलम प्रिंट हो गए। ये मैं दिखा देता हूँ। मैट्रिक्स खोल देता हूँ, अनकमेंट कर रहा हूँ उसे, और इसमें एक और रो बढ़ा देते हैं, 7 8 9 सॉरी 7 कॉमा 8 कॉमा 9 से सेव करें। और फिर अगर मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, प्रिंट करूँगा तो ये बेसिकली 2 ही प्रिंट करेगा और सारे कॉलम प्रिंट कर दिए। जैसे 7 8 9 प्रिंट नहीं किया क्योंकि हमें सिर्फ फर्स्ट 2 रोज चाहिए थी और 2 को ये नहीं कंसिडर करेगा। सिमिलरली अगर हमें सारी रोज चाहिए और सिर्फ सेकंड कॉलम चाहिए तो वही फर्स्ट से लेके सेकंड कॉलम तक, मतलब वो सिर्फ फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम को प्रिंट करेगा और सारे के सारे रोज को प्रिंट कर देगा। अब अगर हमें वही मैट्रिक्स क्रिएट करनी है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है शेप, ये हमने उसमें भी पढ़ रखा है। ये हमने उसमें भी पढ़ रखा पाइथन में। जो शेप फंक्शन होता है बेसिकली वो रो और कॉलम के लिए होता है कि नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज। फिर उसके बाद साइज फंक्शन होता है जिसमें हम नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स करते हैं। मैं ये दिखा देता हूँ करके। अगर प्रिंट करा मैंने शेप वाला, कंट्रोल वी, और इसे कर देता हूँ कमेंट, शेप करें तो ये 3 इंटू 3 आ गया। ये इसका बेसिकली रो इंटू कॉलम है। फिर अगर मैं साइज करूँ तो साइज इसका आएगा, इसमें कितना ये साइज तो कर सकता है, तो आई थिंक 9 होना चाहिए, 9 आ गया। और फिर इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कि इसकी डायमेंशन क्या है तो इसकी 2D है तो 2 डायमेंशन होगा, 2 डायमेंशन होगा। तो
अब आगे बढ़ते हैं। अगर हमें फाइंड करना है मिनिमम और मैक्सिमम, तो ये तो बिल्कुल मतलब पाइथन में जो हमने सीखा था सेम वैसा ही है। मैक्सिमम फंक्शन यूज करते हैं मैट्रिक्स का मैक्सिमम निकालने के लिए, मिनिमम फंक्शन यूज करते हैं मैट्रिक्स का मिनिमम निकालने के लिए। और अगर हमें सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग, अगर हमें सिर्फ कॉलम के अलोंग अगर मिनिमम कॉलम के अलोंग मिनिमम मैक्सिमम चाहिए तो हम मैक्सिमम फंक्शन यूज करते हैं। उसमें एक एक्सिस एक्सिस का एक अलग कॉलम होता है जिसको हम जीरो कर सकते हैं। तो इससे जितने भी उस कॉलम में मिनिमम होंगे, मैक्सिमम या मिनिमम होंगे, वो आ जाएंगे। और अगर एक्सिस को 1 कर देंगे तो रो वाइज बता देगा। ये मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का फॉर्मूला है बस। ये बहुत ईजी है स्टैंडर्ड डेविएशन। बेसिकली अब हम करेंगे मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब एक थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें बेसिकली ग्राफ प्लॉट करने के काम आता है। और ग्राफ प्लॉटिंग इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हमें एक आइडिया देता है कि हमारा कौन सा डाटा सेट जो है वो किसके साथ रिलेट कर रहा है। अगर जैसे मैं बोलूँ कि मेरे को फेयर और पी क्लास के बीच में रिलेशन देखना है तो मैं आराम से देख सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ ग्राफ प्लॉटिंग। तो मैटप्लॉटलिब जो है वो बेसिकली मैटप्लॉटलिब के अंदर पाईप्लॉट एक फंक्शन होता है, हम उसे इंपोर्ट कराते हैं। मैटप्लॉटलिब एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, उसके अंदर हम सिर्फ पाईप्लॉट फंक्शन ही यूज करते हैं बेसिकली। अगर मैं इसे इंपोर्ट कर रहा हूँ, अभी सारा इरेज कर दे रहा हूँ। और अब मैं स्कैटर फंक्शन यूज करता हूँ। स्कैटर फंक्शन हम यूज करते हैं प्लॉट करने के लिए। बेसिकली ये फंक्शन जो है हमें प्लॉट करके देता है जिसके बीच में हमें प्लॉट करना है। जैसे अब मुझे एज और फेयर के बीच में प्लॉट करना है तो स्कैटर फंक्शन इन दोनों के बीच में मुझे एक ग्राफ बना के दे देगा। मैं इसे करूँ, सॉरी मुझे डीएफ लाना पड़ेगा फिर से, तो मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा फिर से पांडास को, क्योंकि इसके लिए हमें वो टाइटैनिक का डाटा सेट चाहिए। और df इक्वल्स टू ed डॉट csv डॉट csv। अब अगर करेंगे तो ये हमें प्लॉट देना चाहिए इसे। ये इसने प्लॉट दे दिया हमें पूरा का पूरा। प्लॉट यहाँ पे अच्छे से दिखता नहीं है तो हम यहाँ पे एक प्लॉट का फंक्शन, मतलब प्लॉट का यहाँ पे होता है कि हम इस पर क्लिक करके पूरा अच्छे से प्लॉट देख सकते हैं। ये हमारा प्लॉट है। तो इसने हमें बेसिकली एज और फेयर के बीच में प्लॉट दे दिया, पर यहाँ पे इसका नाम नहीं आ रहा। अब मुझे चाहिए कि यहाँ पे नाम भी आए कि कौन सा एज है और कौन सा प्लॉट। तो उसमें बहुत इजीली आ सकता है। हम एक्स लेबल और वाई लेबल का यूज करते हैं, plt डॉट एक्स लेबल और plt डॉट वाई लेबल। ये हमें मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लेबल करने के लिए यूज होते हैं। नाम से ही सजेस्ट हो रहा होगा। हो गया, फेयर और एज दोनों आ गए। अब इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि जितने भी प्लॉट्स आप आगे करोगे सारे के सारे प्लॉट्स आ जाएंगे। तो अभी पुराना प्लॉट ये था और नया प्लॉट ये, तो ये भी बहुत अच्छा एडवांटेज है इसका। और अब लास्ट, मतलब अगर ये वाला फंक्शन जो है, ये प्लॉट वाला फंक्शन हम बेसिकली यूज करते हैं तब जब, एक मिनट कुछ रह गया ना, हाँ, जब मतलब अगर हमें एक और क्लास चाहिए, मतलब हम चाहते हैं कि ये जो हमने फंक्शन बनाया, अभी एक ग्राफ बनाया था, इसके साथ हमें एक पी क्लास भी ऐड करनी है, तो हम सी एक नया वेरिएबल डाल के उस पी क्लास को भी ऐड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमें डिफरेंट कलर्स में दे देगा प्लॉट को। अगर मैं यहाँ पे कर दूं तो इसका जो प्लॉट मिलेगा वो एक डिफरेंट कलर का प्लॉट मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर जो पर्पल डॉट्स है वो फर्स्ट क्लास को रिप्रेजेंट करेंगे, ग्रीन डॉट सेकंड क्लास को, और येलो डॉट जो है वो थर्ड क्लास को। ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। और नॉनदलेस की प्लॉट एक फंक्शन होता है जो बेसिकली, मतलब हम लाइन प्लॉट करते हैं जब भी कोई हम एल्गो यूज करते हैं एमएल की, तो उसके लिए हम लाइन प्लॉट करते हैं कि वो कौन से लाइन से फिट होगा वो ग्राफ। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर ऐसे ही एक इमेजिनरी लाइन ले ली है अपने आप से, पर ये जो लाइन के पॉइंट्स हैं ये एल्गो से आते हैं, कोई एमएल के एल्गो से। तो अगर मैं करूँ तो ये एक लाइन दे देगा हमें, ये लाइन जो कि मतलब जस्ट प्लॉट करता है एक लाइन को। ये प्लॉट फंक्शन जो है एक लाइन प्लॉट करता है, जो भी एक्सिस जो भी कोऑर्डिनेट इसके अंदर प्रोवाइड करेंगे उस कोऑर्डिनेट पे। थैंक यू। ओवर टू यू ईशान। ईशान,
Yes, yes, Deepak. Okay, so now let's talk about machine learning and a little bit of their algorithms. Is my screen visible? My screen is visible, right? Hello? Am I audible? Yes, sir, is visible. Yes, yes. Okay, okay. Yeah, okay. So before proceeding ahead with the projects, let's talk about a little bit about machine learning, its definition and types, linear regression, both single and multivariate, and decision trees. So, what is machine learning? So, by the modern definition by Tom Mitchell, a computer program is set to learn from experience E with respect to some class of tasks T and performance measure P. If its performance at tasks in T as measured by P improves with experience E. So, let's take an example of playing checkers. So, here experience would be of playing many games of checkers, task would be of playing checkers, probability that the program will win the next game would be the P. So, in general, any machine learning problem can be assigned to one of two broad classifications. One of them being supervised learning, other being unsupervised learning. So here we'll be talking about supervised learning, which will be used in the project as well. So in supervised learning, we are given a data set and already know what our correct output should be like. And having the idea what it should be like, we try to find a relation between input as well as output. So supervised learning can also be further categorized as regression or classification problem, where in regression problem, what we try is to predict the results in a continuous output, whereas in case of classification, the results are in discrete outputs. Let's take an example. For regression, given a picture of male, female, we have to predict his or her age on the basis of given picture. So age can be a continuous data, 1, 2, 3, 4, up till let's say 100. Classification can be banks have to decide whether or not to give a loan to someone on the basis of his credit history. So, in the basis of the credit history, we decide like, okay, yes or no, we want to give the loan or not. Okay, so let's talk about linear regression with one variable, also called univariate linear regression. It is used when you want to predict a single output value of y, let's say, from a single input value of x. So we are doing supervised learning and regression here in this project. So that means we already have an idea about what the input output cause and effect should be. So if you see now, you can see a graph, an example of housing prices prediction. You can see on y-axis there is prices in thousands of dollars, and let's say there's some attribute which is let's say 500,000 square feet or square meters of area. So you can see the in red you can see the data sets that has been plotted. That is the data that is already been present beforehand, before we are training the machine learning model. We already know about these data, and so what happens in training is that our machine learning model tries to fit all this data within a single line. Let's say this, which is shown in green, and if there's somewhat, let's say, a completely unknown data provided to you, let's say of 1250, what it does is, respect to this x value, it gives you a corresponding y value, which comes somewhere around, let's say, 220,000 in this case. So that's our objective. We have to find a function that fits the data that is given to us. That is called hypothesis function. Okay, the general form in linear is given as theta naught plus theta 1x. It can be relatable to y equal to mx plus c. That's the mathematical equation of a line. Note that this is like the equation of straight line here. And yeah, so that's it. And we try to map the data. So the cost function. So let's talk about the cost function for a hypothesis function. So what we try to do is minimize the cost uh, in order to have the best fit possible of that function on a particular given data set. And in this linear regression, the commonly used cost function is 1 upon 2m summation I1 to m, where m is the total number of given examples, y cap minus y whole square, where yi cap and yi are the predicted value as well as the actual value respectively.
And the predicted value is again the hypothesis function. That's something that you get from hypothesis function. And in this graph, you can see that the theta naught and theta 1 are represented with respect to the cost function. That is, we are trying to minimize this cost function in order to get the parameters theta naught and theta 1 as such that the cost is minimized and we are having the best possible fit to the data set that is provided to us. That's what exactly happens. That's what the math behind is when someone is training a machine learning model. And you can see that it's a convex function. So what is a convex function? Convex function is a someone which has a which has a bulk, in this case a minima, and so we try to optimize the technique. So now let's say, okay, now we have to minimize the cost. So how do we do that? So one of the popular algorithms used for optimization is gradient descent. And the complete derivation of this gradient descent is a completely different topic. So I will not be covering that here. So, but you can see that how it is being used in code and how it is being used to update the values of theta naught and theta 1. You can see that theta naught has been updated. Actually, it has been theta naught minus alpha 1 by m summation I to 1 function's output, that's the prediction, minus the actual y value. So now, and similarly for theta 1, you can say it is theta 1 minus similar to the previous one, and then xi added to it. That's the given input data. Xi is the given input data or the attribute on which we are trying to find the uh, relation between the output variable. Here, m is the total number of examples. We have talked about xi, hypothesis function, and something which is peculiar here is alpha. So what is alpha? Alpha is the learning rate. So what is the significance of alpha? So if we try to look at this figure given, you can see that alpha can be visualized as the steps that has to be taken in order to update the theta 1 in order to reach it to a optimized value. In this case, if let's say alpha is too small, gradient descent will be very slow. Computations will be happening more periodically, and it will be taking a lot of your resources as well as time. But it will surely get to the convergence. If alpha is too large, gradient descent can overshoot the minimum and it may even diverge. It is possible that you will not get a converging theta 1, and rather than optimizing it, you may overshoot the global minima and end up sorry and end up getting a divergent value of theta 1 which does not make any significance. So here's a little bit of visualization, theta naught and theta 1 taking steps and reaching global minima. So okay, so if one of the mentors can paste this link in the chat box of the meet, you can see good visualization of the same, and you will surely get to learn a little bit more. Okay, is the link provided? Can someone confirm? Should I move on? Yes, Ishan, you can move on. I will put on the chat. Okay. So now let's talk about linear regression with multiple variables. So now you have a pretty good understanding of the linear regression algorithm, and using them with multiple variables is the next step that we want to take. So what I mean by multiple variables is having more than one attributes. That's the value of xi. It should be now a vector and having multiple values rather than just, let's say, if you have previously attributes like just the size of the house in meters square that I have shown you in the example. From now on, let's say you have more information about, let's say, number of bedrooms, the area, the geographical location of it, etc. So that's what I mean by number of feet. And even if you have a single feature, let's say if you have size and if you want to get a better fit to the data rather than having a single linear form, in this case you can see that y equal to root x function would be more plausible as well as you can say accurate to predict the values of this data. So one can use a size as well as root size as another attribute while training the data. Okay.
So hypothesis function would be like we have these as input features and this as corresponding parameters that we have to optimize. Same cost function used in both the linear regression. Gradient descent, there's only this change in gradient descent, then that theta knots will be now updated by multiplying the sigma term with their corresponding features, as you can see. And you have to repeat it after every iterations. Okay, now let's talk a little bit about decision tree. That's another example that we'll be using into today's project. So decision tree, I'm sure that you must have seen the normal decision tree used in data structures and everything, right? So you have this root node, and then you make a certain decision on like particularly this topic is a binary one because you have like two leaf nodes. So let's say if petal of width is less than equal to 0.8, so you go to this one if it is true, or this one it is false. So this is the basic structure of decision tree. So now what happens in this algorithm is uh, what we try to do is we find from certain features that which feature would be the most affecting the result of the output if changed, right? So how much it is contributing the result of the output. So that we use as the primary, you can say the root node, and then others will be their branches, right? So how to measure that? So to measure that, uh, we have this quantity entropy, which is the measure of randomness of the system, which is given by this formula given, where pi is the probability of um, a particular object in a class. Like for example, if you have petal with like, so if you're talking about petals, you have numerous data related to that, and whichever one's distinct, you take their probabilities as different, divided by the total number of objects present in that class. So now there's another thing, information gain, which uses this quantity of entropy and try to maximize information gain, which in turn does exactly what I just told you. That is the to get the most, um, you can say the affecting feature to be at the root node. So this is the graph of entropy versus probability. You can say it's highest at 0.5. Now another way to do is through Genie Index, which is determined by deducting the sum of squared, deducting the sum of squared of probabilities of each class from one mathematically. It is given by this formula where pi stands for the same thing. Here you can see an example of this, where 50 probability of each is 1 by 3, p square 1 by 9, and summation would be 1 by 3. And putting it into the formula, you get 0.6 as Gini index. So the higher the Gini index, the more above it would be in the decision tree. You can say that. So there are other concepts. Okay. Give me a minute, please. Yeah. So okay. So there's this quantity R2 or R squared, also called the coefficient of determination. So this is the formula given on the screen about this. So what it does is, where you can see that like 1 minus summation of yt minus yp, where yt is the true or actual value that is given to us in the test data, and yp is the predicted value, and y mean is the mean of all the value given to us. Like okay, and then we do the square summation, divide it, and subtract it from one. This will give a so the higher the R2 score, the better is our the performance of our model, and you will get a demonstration of this when Aditya begins with the hands-on learning session. Right. So there's this confusion matrix. It's a technique for summarizing the performance of the classification algorithm. Another technique. You can see um, through rows that there's the actual values, yes or no, and in the columns you have the predicted ones.
and the ones which we get TN and FP are the true negative or false positive and respectively like that. And if we have to find the accuracy, what we do is take sum of true positive and negative and divide it by total. And in this case, we get an accuracy of 0.91, which is pretty good. Okay, so now we'll start with the hands-on learning session by Aditya. So, okay, Aditya, you can begin now. Okay, sure. Let me share my screen. Okay, can you please confirm in the chat, is my screen visible? Yes, it is. Okay. So the idea I will be using is Jupyter Notebook because in this I can run my code cell by cell, and the focus will be on sklearn. So what is sklearn? Sklearn means scikit-learn. So basically it is a machine learning library. इसके अंदर हमारे lots of machine learning models already implemented है. For example, linear regression, KNN. KNN means K nearest neighbor, random forest, decision tree. So we will be using sklearn. So these are the four things what we'll be doing. First of all, I will load the data, then I will split the data. Split the data means मुझे अपने डेटा में से एक पार्ट टेस्टिंग के लिए भी अलग से निकाल के रखना पड़ेगा, so that I can check the accuracy or how good or bad my is model. Then we will generate the model and evaluate the accuracy. So sklearn के अंदर already हमारे कई सारे data sets present हैं, तो which is present in the module called data sets. So first of all, I will be going for linear regression. For that, I will be using a Boston dataset. So let's see some details about this. So let's just first of all load the see the Boston dataset. Just a minute. So we have input data in the attribute called data. Then there is a output value in target, and there are some feature names, and we are having some details about dataset. So let's just print these details separately. So print. So in my this Boston dataset, I am having 506 data points, and there are total 13 columns, or can say 13 features, and there is a one target feature that we have to predict. I can say there is a information about these attributes. For example, the crime. So that is a per capita crime rate by the town, and there is a tax which is full value property tax rate per 10,000, and median value, that is something we have to predict. Median value of owner occupied homes in $10,000, and the creator of this dataset is they are the creator of this dataset. So let's just or I can say extract our input and output dataset. So in X, I will be extracting my input data. So Boston dot data, and in Y, I'm having my target. Okay. So let's just see the shape of these two. So X dot shape, and so as the description says, I am having 506 rows and 13 columns in X, and 506 rows and one column in Y. And let's just see the type of this data set. So let's just print the type of, so print type of X, and also type of Y. So these are NumPy array, as you can see, which will be helpful for calculation while we're doing calculation. And we can also visualize this dataset in more structural way using pandas. So let's just import pandas. And I will be creating a data frame. So for that, I am using a function called data frame. Boston
I have to provide the array-like entity. For this, I am providing the X. I want to see structurally my input data set only, and I can let's just print this first of all. And okay, so Boston data. So this is something look like our data in a structural way. We can also add the column names as well. So let's just add that. For that there is a attribute called columns. And in this, I will be providing the Boston teacher names. Just a second. Okay. So the spelling of columns. As you can see, I have added the column name also. Now you can see the data in more structural way. Okay. So I have loaded my data. Now what I have to do, I have to split my data. So I have already, due to some limited time, I have already written some code. So I will be explaining this. So for to split the data, there is a sklearn already have a function called train test split, which is present in the package called model selection. So I have to provide this some arguments. For example, I want to split the input and output both. So I have provided x and y both. Then there is a attribute called train size. Train size मतलब कि तुम्हें कितना percentage of whole data as a training रखना है और कितना as a, तो मैंने 0.7 डाला है, तो इसका मतलब है 70% ऑफ डेटा मैं ट्रेन के लिए यूज करने वाला हूँ और 30% जो रिमेनिंग है वो टेस्ट के लिए यूज करने वाला हूँ. इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है 0.75 है. देन देयर इज अ एट्रीब्यूट कॉल्ड रैंडम स्टेट 1. सो बेसिकली इससे क्या होता है कि एक हर बार जब भी मैं इसको रन करूँगा तो सेम सेट ऑफ रिजल्ट आएंगे. बिकॉज अगर मैं इसको नहीं रखूँगा तो क्या होगा, अलग अलग हर बार अलग अलग तरह का रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होगा और अलग अलग रिजल्ट आएंगे. तो रैंडम स्टेट 1 रखने से क्या होगा, मेरे को सेम रिजल्ट आएंगे जब मैं इवेलुएट कर रहा हूँ या फिर ट्रेनिंग कर रहा हूँ कुछ भी. Okay, so I have my x train, x test, and y train and y test. I have printed the shape of these four. So this is the shape. Just a second. So it is 354 and 13. As 13 will be the column, and the rows are 354 for training and 152 for the testing, and 13 columns. Okay. Secondly, let's we have splitted our data. Now create our model. Let's just. So first model I will be using is linear regression. So linear regression is present in the linear model package of sklearn. sklearn. Okay. I have imported my linear regression. Let's just create our model. I am creating my model. Okay. Let us add another one here. So I have created my model. Now what I have to do, I have to train my model. For training, I will be providing the training data. So to do so, there is a function called fit function. So regression dot fit. So I have to provide it the training data. So I will provide in the X train and Y train. Okay. So training part is done. Now let's just predict the values. For predicting, I have to provide the X test, and it will return me the predicted values. And the function for this is predict function. So regression dot predict, and I have to provide the testing array, and it will return me the array of predicted values. Okay. Cell, another cell. Okay, so training part is also done. Now the last thing I have to do is the evaluation. How good or my bad is the model predicting the values. To do so, there is a metric in sklearn which is called coefficient of determination, and which is also known as R2 score.
this is something the formula it is. So if you see the, if I predict all the values as true value, so numerator becomes 0. That is, it will lead to the R2 score become 1. So that is the 100% accuracy it can achieve. So higher the R2 score, better is the result of my model. So there is a function called score function, which return me the R2 score of my model. R2 score, and I have to provide him with two arguments. One is the X test and Y test. Basically, X till we do ये X test लेगा, उससे Y predict कर लेगा और उसको compare करके मुझे score लाके देगा. So let's just run it. So I am getting a 0.78 score, which is somewhere around 78% accuracy. We can optimize our linear regression more. How we will add, we can add on more features. तो बड़ा टाइम क्या करने वाला हूँ basically. हाँ, so यहाँ पे बेसिकली क्या करा है कि मेरे पास 13 फीचर्स थे. अब मैं क्या करूँगा, इनके अंदर इनके स्क्वायर्ड फीचर्स ऐड ऑन कर दूंगा. जैसे फुल क्राइम है तो मैं इसका स्क्वायर एक अनदर फीचर ऐड कर दूंगा इसके अंदर क्राइम. तो फॉर दैट लेट मी राइट सम कोड. सो आई एम रनिंग अ फॉर लूप protecting features, these protecting features. Sorry. So the new feature I will be adding is a pair of individual column. So I will be doing this, some concatenation of strings, and I will be Boston in the dataset itself. I have created this new feature, and the value of these features will be squared of those features of Boston. Square. So I have added all the squared features. Let's just look at the dataset again. Using that for that. Okay, as you can see, I have added the squared features also. So now let's just see कि इससे मेरी accuracy अच्छी होती है कि improvement नहीं होती है. Let's just run this code again and again. Now my X will be updated also. Later I have to change also. My X will be Boston data dot value string. Sorry. So as you can see, now the number of features we have 26. So I have added these squared features of all the 13 features. Let's just see the कि इससे मेरी accuracy improve होती है कि नहीं होती. So I am creating the regression. Again मैंने train दोबारा call करा है और let's just again call the prediction, and now let's see the score. So as you can see, now it will become 0.87. So it has been improved. So this is what we can do by adding more and more features. So that's the optimization we can do with linear regression. Okay, and we can also so I have written some code to plot the graph between the predicted and y tested values. So let's just run this. A moment. Sorry. So as you can see, the rough sketch of this graph is somewhere around x equal to y line. Not exactly that, but somewhere around x equal to y. That means कि मेरी जो prediction है वो actual value के around ही है basically. The next thing, so मैंने एक क्या करा है, लीनियर एक रिग्रेशन मॉडल को यूज करा है. अब मैं एक क्लासिफिकेशन मॉडल को यूज करने वाला हूँ, विच इज कॉल्ड डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन मॉडल. फॉर दैट मतलब कि मेरा जो टारगेट वैल्यूज होंगी वो क्लासेस के फॉर्म में होगी. सो लेट्स जस्ट रन दिस, एंड इसके लिए मुझे एक क्लासिफिकेशन डेटा सेट यूज करना पड़ेगा. तो मैं आइरिस डेटा सेट यूज करने वाला हूँ, विच इज अ क्लास जिसके अंदर टारगेट जो है 3 क्लासेस में होते हैं बेसिकली, सेंटोसा, वर्जीनिया एंड वर्सिकलर एल्गोरिथम. लेट वी विल सी द डिस्क्रिप्शन आल्सो. सो लेट जस्ट import load the data. So iris dataset will be calling the load function.
and the name of data set arrays. Okay, and let's just print directly the details about this. So in this data set, I am having 150 data points, and it is a balanced data set. Means कि 3 classes है मेरे पास और हर एक classes के 50-50 data points है. Total मेरे 4 attributes है, which is our sepal length, sepal width, petal length and petal width. And as you can see कि जो मेरी टारगेट वैल्यू जो मेरे को प्रिडिक्शन करनी है वो सिर्फ क्लासेस के फॉर्म में कि मेरा जो भी आउटपुट होगा वो इन तीनों में से किसी कोई एक ही होगा. इधर इज अ सेटोसा, वर्सिकलर और वर्जीनिया. एंड this is some details about this. No, कोई ज़्यादा वो नहीं है. So let's do the splitting by using again train test split. So x train I have to write x test. Code will be the same, so I can copy it from above. Okay, this is the line. Copy this. Okay. Okay. Or instead of x, I will provide the iris dot values, iris dot data, and iris dot target. And again, train size is 0.7, end of state is 0.5, and let's just print the shape. And as you can see, there are 4 columns and 105 rows. And I will be again the numpy array. I'm skipping right. Now let's just create our model that we can. I have already imported my classification decision tree. I have already imported. So let's just create our model. So decision tree classifier. Okay. I have created my decision tree, and let's just call the fit on it. elf dot fit. Then again, I have to provide the training data. Okay. So training part is done. Before predicting the values, I will like to see how my decision tree is usually look like. So there is a way to do so. For that, I am importing some libraries. That is GraphBase. So GraphBase is a open source graph visualization software, and there is a function called export GraphBase, which will return the representation of my diagram in dot format. But to visually look at, I have to import another library which is called py.plus. ये basically क्या करता है, Python interface provide करता है dot format वाली चीजों को. So I have already written some basic code. Let me explain this. So export GraphBase is present in the module called tree, and I have मैंने इसको अपना क्लासीफायर प्रोवाइड करा है. उसके बाद मैंने कुछ और एट्रीब्यूट्स भी दिए हैं, तो इसलिए क्योंकि ताकि ये विजुअली ज़्यादा अच्छा लगे. बेसिकली फीचर नेम्स मैंने इसमें आइरिस के फीचर नेम दे लिए, और क्लासेस जो इसको प्रिडिक्शन करनी है वो कौन सी वाली टारगेट नेम्स. एंड आई हैव filled मतलब कलर्स. आई हैव एडेड आल्सो कलर्स ऑन दिस. देन देयर इज अ राउंडेड, द बॉक्सेस विल बी राउंडेड, and I have imported the py.plus. Then there is another library which is already imported, already present in the Anaconda prompt. It's called image, and I have used the function called graph from dot data. So it will return, I can say PDF, is PDF form or PNG, whatever you want. And I have called this create PNG. So let's just run this. So this is something my recently look like. So the first attribute it choose to split upon is petal length, and the Genie index for this is 0.665. Ishan has already explained you Genie index, and total samples at this particular node is 105, out of which it is classified at 36 for Sentosa.
32 for versicolor and 37 for Virginia. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा ट्री यहीं तक लिमिटेड होता तो और मैं यहीं से प्रिडिक्शन कर रहा होता तो इट विल बी प्रिडिक्टिंग द मेजोरिटी वन, तो मेजोरिटी वन 37 वर्जीनिया है, तो दैट्स व्हाई इट इज रिटन क्लास वर्जीनिया. बट मेरा डिसीजन ट्री काफ़ी डेप्थ में गया है, प्योर नोट्स तक गया है, दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग होल ट्री. एंड these are pure nodes. Pure nodes means there is no other, यहाँ पे सेटोसा के अंदर कोई ऐसा नहीं है, ओनली वर्सिकलर इज देयर. ओके, सो हमने अपना डिसीजन ट्री भी देख लिया है. अब लेट जस्ट सी दी एक्यूरेसी और वीक. सो इन द लीनियर रिग्रेशन इट वाज कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, द स्कोर फंक्शन वी है, बट इसके अंदर हमारा जो है स्कोर फंक्शन एक्यूरेसी होता है बेसिकली. वो आप यहाँ पे R2 स्कोर नहीं होता है, एक्यूरेसी होता है. एक्यूरेसी मीन्स टोटल में से मैंने कितनी राइट प्रेडिक्ट करी है. अगर मेरे पास 100 पॉइंट्स थे और उनमें से मैंने अगर 90 सही प्रेडिक्ट करे तो आई एम गेटिंग 90 as my accuracy. And again I have to provide it the X test and Y test. Similarly, X test and Y test. Yes, and this. So I am getting somewhere around 95% accuracy, which is very good. So, but स्कोर इज नॉट. अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि फॉर एग्जांपल मैंने एक ऐसा मॉडल बनाया है जिसमें सिर्फ 0 और 1 ही हमें प्रेडिक्ट करने हैं, और मैंने अपने टेस्टिंग डेटा के अंदर 95 0 है मेरे टेस्टिंग डेटा के अंदर, और 5 जो है 1 है. और मैंने ऐसा मॉडल बना दिया है जो कि हमेशा 0 ही प्रेडिक्ट करता है ना. तो उस केस में अगर तुम देखो कि 95 0 थे और मैंने 95 थे मैंने, तो उसके अंदर मेरी एक्यूरेसी 95% आ रही होगी. बट एक्चुअली में सब हर जगह वो 0 ही प्रिंट कर रहा है, तो बेसिकली वो बेकार मॉडल है, वो कोई अच्छा नहीं है. तो एक्यूरेसी हमें सब कुछ नहीं बता सकती. तो हमें एक और मैट्रिक होता है जो है जिसका नाम है कंफ्यूजन मैट्रिक्स. सो लेट दिस इंपोर्ट which is also present in SQL and all. So in the module called matrices, and it is import confusion matrix. Okay, and for printing the confusion matrix, let me explain something. For example here, so something ऐसा कुछ दिखता है हमारा confusion matrix कि मान लो मेरे क्लास 0 और क्लास 1 ही प्रेडिक्ट करनी है, और टोटल मेरे 50 जीरोस थी एक्चुअल वैल्यूज, टोटल 51 थी जो एक्चुअल थी. जीरोस में से मैंने 40 0 प्रेडिक्ट करी है और 10 ऐसे 1 प्रेडिक्ट करी है इसके अंदर, और 45 इसके अंदर मैंने राइट प्रेडिक्ट करी है, और 5 जो मैंने 0 कर दी विच इज इनकरेक्ट. तो कुछ इस तरीके का हमारा मैट्रिक्स दिखता है. इससे हमें ये पता लग जाएगा कि एक्चुअल कितने थे और हमने कितने उसमें से ट्रू प्रेडिक्ट करे हैं सही. सो let us print the confusion matrix. Okay. It requires 2 arguments. One is the Y test and another one is the Y predicted. And let me just print this. Just a minute. Okay, the spelling of matrix is color. Matrix. Okay. Found input value with consist number 4552. Okay. I'm getting an error. Okay. Can any other mentor tell me where I am wrong? Any mistake I am making? Let me check it. Maybe. Okay. Let's just do one thing. Text.
Just a minute, guys. Okay. Let us check the documentation of this. Don't worry. Here is the documentation. So right now I'm not able to see the error, resolve the error. So I will resolve the error and I will share this notebook in the Discord channel of GDSC. So, but I am तो जैसा भी होगा थोड़ा इसी तरह का कुछ दिखा होगा. Y test और Y predicted try करिए. Okay, so switching the. I think it's not the right order. Oh. In the syntax, there is no mistake. Okay, so let's just skip this. And in the Discord channel, I will tell you the कि कहाँ mistake करा था मैं Discord channel में तुम्हें बताता हूँ सबको. Okay, so this was the end of our coding part. So let's end the session. Thank you. If anyone has any questions regarding the session, they can please ask. They can please unmute and ask. Otherwise, they can put it in the chat box and we'll answer the questions. Okay, since there are no questions now, if you have any questions, you can put it in the Discord channel and we'll make sure to answer it. Okay, thank you everyone for joining. We are ending this session right now. Thank you.